अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। आज जो एप्पल जो है वो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस अभी होस्ट कर रहा है और इट्स गोना स्टार्ट अबाउट इन 8 मिनट्स। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था लाइव, ताकि हम इसको हिंदी और उर्दू में डिस्कस कर सकें। जो भी टेक्नोलॉजीज़ एप्पल आने वाले मंथ्स में लाने वाला है उसको हम सारे मिल बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है एप्पल क्यों कर रहा है। और मैंने ये सुना है कि एप्पल जो है इस की नोट में अपनी मैकबुक प्रो की लाइन जो है वो रिफ़्रेश करने वाला है, जिसका मैं पर्सनली बड़े देर से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जो 2016 की मैकबुक प्रो आई थी वो कोई इतनी अच्छी स्पेक वाइज नहीं थी एज़ इन कंपैरिजन टू पीसी एंड स्टफ़। तो होपफुली इस की नोट में एप्पल जो है अपनी मैकबुक प्रो लाइन को रिफ़्रेश करेगा, अपने मैकबुक एयर को रिफ़्रेश करेगा, जो कि 2015 से अभी तक रिफ़्रेश नहीं हुई है। और कुछ iOS की चेंजेस बताएगा, कुछ सीरी की चेंजेस बताएगा। तो हम ये होप कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैपन होंगी इस की नोट में। तो ये अबाउट 8 मिनट्स में स्टार्ट होने लगी है, 7 मिनट्स में। तो इसको हम वॉच करेंगे और एज़ वी गो अलॉन्ग हम इसको डिस्कस करेंगे कि एप्पल जो है कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आने वाले मंथ्स में ला रहा है। दूसरी, आई बिलीव कि एप्पल जो है वो अपना आईपैड की रेंज भी रिफ़्रेश करेगा। तो दिस लाइव स्ट्रीम विल लास्ट फ्रॉम एप्पल फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इस स्ट्रीम को लाइव पुट कर देता हूं ताकि आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे नज़र आए। और एज़ वी गो अलॉन्ग इन टेक्नोलॉजीज़ को जो है जो एप्पल रिलीज़ करने वाला है कमिंग मंथ्स में, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? ऑब्वियसली हम एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन में बहुत यूज़ करते हैं प्रो लेवल पे। तो हमें आने वाले मंथ्स में पता लग जाएगा कि अगर हम होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहे हैं या अगर हम एक प्रोफेशनल स्टूडियो बना रहे हैं ऑडियो या वीडियो से रिलेटेड, तो हमें किन प्रोडक्ट्स में स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स एप्पल ने 2015 और 16 में लेके आए हैं वो अब टाइम आ गया है कि उनका वो रिफ़्रेश हो। और ऑब्वियसली एप्पल की जो है 10th एनिवर्सरी है फॉर द आईफोन, लेकिन इस की नोट में एप्पल जो है वो आईफोन 8 को अभी डिस्कस नहीं करेगा। वो उन्होंने अपने सितंबर के की नोट के लिए सेव किया हुआ है। तो चलिए, जैसे ही एप्पल स्टार्ट करता है इस लाइव स्ट्रीम को, इस की नोट को, तो हम जो है आपस में मिलके जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन आप लोग मुझे कोई भी होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए मैं इस स्ट्रीम को पुट करता हूँ लाइव ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। होप आप इसको देख सकते हैं, इस स्ट्रीम को। मुझे ज़रा टेस्ट करने दीजिए। ओके दोस्तों, होप अब जो है आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए तो बेस्ट है, ताकि हमें पता लग सके जो एप्पल जो है जिन चीज़ों को इस की नोट में इंट्रोड्यूस करवाने लगा है उसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या वीडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या लाइव इवेंट से। क्योंकि पर्सनली मैं लाइव इवेंट्स, साउंड लाइव इवेंट्स में या वीडियो लाइव इवेंट्स में एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करता हूँ। तो मेरे लिए ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी मायने रखती है और होपफुली आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी मायने रखेगी। क्योंकि जब आप एप्पल के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। ये आपके साथ लास्ट करता ही करता है फॉर 10 ईयर्स। तो चलिए, इट्स अ बिग थिंग दैट्स गोना हैपन, और इसको हम मॉनिटर करते हैं और इसको हम देखते हैं।
सही है जी। जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप भी जो है वो नंबर खुला हुआ है। नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं और ये डिस्कशन हम लाइव ऑडियो के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट लिसन व्हाट्स गोइंग ऑन दोस्तों। अभी जो है वो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हुई है। देयर आर 7 मिनट्स लेफ्ट। ये जो एप्पल की ये की नोट है, दिस इज़ द बिगेस्ट। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ये बिगेस्ट क्यों है मेरे लिए, क्योंकि मैं मैकबुक प्रो की रिफ़्रेशमेंट का बहुत अरसे से वेट कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू इन्वेस्ट इन वन। लेकिन जो 2016 के मॉडल्स आए थे हार्डवेयर वाइज, उसमें से एप्पल ने एसडी कार्ड निकाल लिया था, यूएसबी 3 निकाल लिया था, काफ़ी जो एप्पल ने पोर्ट्स निकाल लिए थे, मैग सेफ निकाल लिया था। एप्पल ने सिर्फ जो पोर्ट्स प्रोवाइड किए हैं मैकबुक प्रो 2016 में, वो प्रोवाइड किए हैं यूएसबी जो सी है, जिसको हम थंडरबोल्ट 3 भी कहते हैं, जो इंटेल ने इन्वेंट किया था। तो अब टाइम आ गया है दोस्तों। अगर आप देख सकते हो डिजीकोड का डेस्क है, दिस इज़ SD7। ये लाइव इवेंट्स में बहुत हिट है। ये ऐसी लाइव इवेंट्स में यूज़ होता है ये डेस्क। और इसको मेटालिका, U2 और जितने भी अमेरिकन जो है सिंगर्स, वो इसको यूज़ करते हैं, या ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में ये लाइव डेस्क यूज़ होता है। ये डिजिको का SD7 है। एंड इट्स ये डेस्क तकरीबन कॉस्ट करता है स्टेज बॉक्सेस के साथ अबाउट 100,000 पाउंड का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना महंगा है। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस डेस्क। ओके दोस्तों, राहुल बख्शारिया, हेलो सर। हाय राहुल, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप भी मैं ओपन कर देता हूँ और मैं नंबर आपको बता देता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में वैसे नंबर छोड़ा हुआ है, बट लेट मी चेक। ओके दोस्तों, आई होप सो ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो नंबर जो है वो हम बाद में देख लेंगे, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू दिस। और जैसे हम ये इसको लिसन करेंगे, आप जो है आप भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनिए, इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनिए, और हम डिस्कस करेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा दोस्तों, राहुल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आस्क कीजिए। सो दोस्तों, आप जो है ये लाइव स्ट्रीम अपने फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को मेरे चैनल पे आके देखिए, ये आप अभी एप्पल की वेबसाइट पे जाके भी ये लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। और ऑब्वियसली इस लाइव स्ट्रीम में, इस की नोट में, एप्पल जो है जिस तरह कि मैंने बताया कि मैकबुक प्रो की नई लाइन को इंट्रोड्यूस करवाने लगा है। ऑब्वियसली मैकबुक एयर को भी इंट्रोड्यूस करवाने लगा है नई लाइन को, क्योंकि मैकबुक एयर काफ़ी अर्से से रिफ्रेश नहीं हुई थी सिंस 2015। उसके बाद जो है
नया iOS को इंट्रोड्यूस करवाने लगा है। उसके बाद जो है ये जो है अपना आपको आईपैड प्रो जो न्यू आने लगे हैं उनको रिफ्रेश कराने लगा है। अच्छा, एक सेकंड मुझे सुनने दीजिए। अच्छा, राहुल पूछ रहे हैं सर क्या एप्पल अब अपने सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंज करेगा? Ladies and gentlemen, our presentation will begin shortly. As a courtesy to our presenters and other members of the audience, please take this moment to switch all electronic devices to silent mode. Thank you. राहुल पूछ रहे हैं सर क्या एप्पल अब अपने सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा राहुल। ये जो है iOS से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आने वाली हैं इसमें, और लेट्स सी लेट्स वेट, क्योंकि ये सारे र्यूमर्स हैं अभी तक, लेकिन इस की नोट के थ्रू हमें पता लगेगा कि एप्पल क्या चेंजेस लाने वाला है। ये जो की नोट है हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हम प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्शन में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, इसलिए हमें इस तरह के की नोट्स को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो हमें पता हो कि हमें कब रुकना चाहिए और कब चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराना प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली उसका हार्डवेयर जो होगा वो स्लो होगा नए प्रोडक्ट्स की निस्बत। तो हमें हमेशा जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि इनसे हम कुछ सीखें और हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके पे करें। अच्छा, दिनेश दानियशवार राउत, हाय सर, हेलो। गाइस, ऑब्वियसली एप्पल वो कंपनी है जिसने अपना मार्क सिंस 1980s बनाया बिकॉज ऑफ स्टीव जॉब्स, और काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल इंजीनियर्स इस कंपनी में जिन्होंने काम किया ओवर द ईयर, ये एक ऐसी सक्सेसफुल कंपनी है जिसको हमें देखना चाहिए। और जो हमारी नई यंगर जनरेशन है 15 to 20 के दरमियान, उनको ऐसे की नोट्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकलते इस लेवल पे कि वो अपनी कंपनी फॉर्म करके आगे कुछ कर सके दुनिया में। और ना ही हमारी कंट्रीज़ में इतने चैनल्स हैं। लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्रीज़ में भी शुरू हो चुकी है, और इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। अच्छा, दुनियाशवार पूछ रहे हैं साउंड इंजीनियरिंग की बुक्स कहाँ से लें? ऑनलाइन अमेज़ॉन से मिलती हैं। सर मैंने अभी मैकबुक प्रो लिया है तो क्या मैं लॉस में हूँ? राहुल, आपने कौन सा मैकबुक प्रो लिया है और आपने एकदम क्यों ले लिया? आपको वेट करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं आपने कौन सा लिया और कितने का लिया? अच्छा, म्यूजिक हाउस पूछ रहे हैं, हाय भाई, हेलो। राहुल, आप बताइए कि आपने कौन सा मैकबुक परचेज किया है और कितने का लिया है?
तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको वापस करो या उसको रखो, क्योंकि आज जो है एप्पल होपफुली इफ रूमर्स आर करेक्ट, आज एप्पल नया मैकबुक प्रो 2017 इंट्रोड्यूस करेगा इस की नोट में। मैकबुक प्रो 4 GB रैम 500 GB हार्ड ड्राइव। इसका मतलब है ये आपने पुराना मैकबुक प्रो लिया है। ये कोई 2012 या 11 का लिया आपने या 13 का लिया है? ईयर भी बताइए ना, मॉडल नंबर भी साथ में बताइए। अच्छा, उमर राहदवा। हाय सेल, हाय उमर, हाउ आर यू? उमर स्टिक अराउंड रहो इस की नोट के लिए। ये की नोट बहुत ज़रूरी है फॉर अस एज, अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में अपना कुछ करना चाहते हो या वीडियो प्रोडक्शन में, बिकॉज एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाइडली यूज्ड होते हैं प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में, लाइव साउंड में और इन चीज़ों में। My desk is on the सही है 7th जी। floor. If you need anything, you can call me. Make sure आई you keep थिंक your की ID नोट with you स्टार्ट हो because रहा है you're going to need दोस्तों। to आप badge क्वेश्चंस in आस्क every करते time you रहो re-enter. while the keynote is Cafeteria going is through। on the 4th floor, हम and डिस्कस we drive करते over to रहेंगे, bus लेट्स about सी। 12:30. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. अच्छा I promise it's only temporary. राहुल, All right, thank you. अगर आपने 2011 का लिया है तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बारे में बात कर रहा था जो लेटेस्ट मॉडल्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 2011 लिया है दैट्स फाइन, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कितने का लिया है मुझे ये बता दीजिए। अच्छा दोस्तों, साथ में की नोट्स भी देखिए। ये करना क्या चाह रहे हैं, इनके जो एडवर्टीजमेंट्स है इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। लुक एट इट। Va? Nej men... Förbannade apparat! Nej!怎不是告诉我？老公啊，WeChat 不工作了。Come on! Legacy, we need Airbnb! This is not an Airbnb! Where are we, man? I don't know, man! दोस्तों ज़रा मैं ऐड देख रहा हूँ, आप भी देखिए। दिस इज ह्यूमर। God. Leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Selfies! Hey, buddy! Selfies! Selfies! Apocalypse is nigh! Apocalypse is nigh! Okay, who wants to go first? iTunes! Get you iTunes! अच्छा दोस्तों, वाइल हम जो ये ऐड देख रहे हैं, मैं आप लोगों को अपनी यंगर भाइयों को और बहनों को ये बताना चाहूँगा, अपनी यंगर जो जनरेशन है उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एप्पल के डेवलपर बनते हो, इफ़ यू आर बिटवीन 15 एंड 20, तो आप इसका इवेंट ज़रूर देखो और आप प्रोग्रामिंग को सीखो और आप एप्पल के डेवलपर बनो। इस चीज़ में बहुत फ़ायदा है। आई मीन आजकल अगर आपने आईटी में घुसना है तो अमेज़ॉन का AWS जो क्लाउड है उसमें काफ़ी अच्छी कमाई है। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का एज़ोर है, अगर आप आईटी में घुसना चाहते हैं। गाइस, ये टिम कुक है। Good morning! ही इज़ द CEO ऑफ एप्पल नाउ। I'm so glad that really can't happen. Welcome to WWDC. It's great to be back in San Jose, the heart of Silicon Valley and right down the street from Apple in our new campus. It's been 15 years since we held the developer अच्छा, conference in राहुल San कह रहे हैं कि Jose. उन्होंने and an awful lot has 55,000 changed. रुपीस का लिया आपने। But the one thing that hasn't changed is our commitment to the developer community and our ability to do amazing things together. This is going to be the best and biggest दिनेश्वर, मैं WWDC व्हाट्सएप का नंबर ever. देता हूँ, लेट हिम ओपन।
गाइस इसको जरा सुनते हैं Every इस बंदे year, को. we host WWDC to bring Apple engineers and our amazing developers together on our collective mission. मैं आपके लिए WhatsApp का नंबर भी निकालता I'm हूँ. एक pleased to सेकेंड. tell you, the Apple developer community has never been more vibrant. We now have 16 million registered developers in the program around the world, and we added 3 million last year alone. We've got 5,300 developers here this morning, our largest group ever. देखा गाइस आपने सुना कितने ज़्यादा डेवलपर्स हैं. 75 countries across the world. 16 million registered developers हैं. And we have the most student developers with us this morning ever. और इसने कहा है कि हमारे पास मोस्ट जो डेवलपर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं. तो दोस्तों मेरे भाइयों पाकिस्तान और इंडिया से आप भी हिम्मत करो. वो लोग ये बच्चा भी डेवलपर है. His name is Yuma Sorianto. He's from Australia and he's just 10 years old. ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया से और सिर्फ 10 साल का है. He was 6 and he already has 5 apps on the App Store. और जब ये बच्चा 6 साल का था इसने ऑलरेडी 5 एप्स बना ली हुई थी, डेवलप कर ली हुई थी. I met Yuma yesterday and I can't wait to see what he's going to accomplish next. And while we've got some great up and coming developers like Yuma, we've got some that got a bit of a later start. Masako. अब ये जो Masako है is just 82 years old. ये 82 years old की बंदी है और ये डेवलपर है एप्पल की. कम ऑन, जागो मेरे भाइयों, जागो. दुनिया कहाँ जा रही है, हमें भी So if you करना है. haven't published yet, there is still time. Let's give them a big round of applause. Amazing. Now let's turn our attention to our 4 incredible platforms. Of course, as you know, each of them stem from the same core technology, but each is uniquely expressed and designed. दोस्तों, I have a feeling ये अपने टीवी को भी refresh करेंगे. We keep Apple TV pushing को. these platforms forward, giving you the developers powerful tools अच्छा, मैं अब questions की तरफ आता हूँ. to change the world. That's why this developer दिनेश, conference मैं is नंबर so निकाल रहा हूँ जनाब. Now we have a lot to talk about today, and I do mean a lot. So I'm dispensing with the updates other than to tell you Apple's doing great. Yeah. We have 6 important announcements. Okay, नंबर मैं लिख देता हूँ जी और बोल भी देता हूँ. Let's get right into it, and I'll start with tvOS. Okay, ये tvOS We के बारे recently में introduced start the कर रहे हैं. TV app on Apple TV, iPhone, and iPad to create the easiest way to discover and enjoy your TV content from across your video channels, all in one convenient place. We launched it with support from just a handful of video channels, but now we have 50 partners integrated into the TV app. And today, we're really thrilled to announce that Amazon is coming. Amazon is coming to the TV app and Apple and all Apple TVs later this year with Amazon ये अपने आप Prime को Video. Amazon से comparison And of कर course, रहे हैं. as you know, Prime Video provides a wealth of great content, thousands of TV shows. और and Amazon का and जो some Prime great Video है वो original Apple content TV के ऊपर like भी आ रहा है. Transparent, Mozart in the Jungle, Man in the High Castle, and so much more. We are so pleased अच्छा, to welcome Amazon दिनेश, to Apple नंबर TV. है +447448948744 So that's tvOS. और ये मैंने description में भी You'll लिख be दिया है. hearing a lot more about tvOS later this year. गाइस मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ DSLR से, तो about 6 minutes वो थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा, about 1 second, तो मैं उसको re-on कर दूंगा. Growth this past year. In fact, it's the #1 selling smartwatch by far. And what's most important to us is that it's #1 in customer satisfaction
again. अब ये अपनी by एप्पल far. वॉच के बारे में बात कर रहा है Apple कि Watch is नंबर 1 designed to स्मार्ट help वॉच you है live a और वाकई healthier ये नंबर life. 1 And स्मार्ट people वॉच are है. absolutely loving the fitness capabilities, the health capabilities, the quick access to information, and even the ability to swim with it. We've got some दोस्तों exciting व्हाट्सएप पे updates जिसने भी to कॉल the करनी हो watchOS. लाइव And to take डिस्कशन you के through लिए them, अभी आप I'd कॉल like to कर लो invite Kevin Lynch in. और आप इस Kevin? लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन जाओगे. Thank you, Tim. So watchOS is moving forward really quickly, and I'm very excited to introduce watchOS 4 today. This furthers the areas that people love and also introduces new ways to make the watch more personal to you. Let's start with watch faces. Now, Apple Watch is great for quickly glancing at information, and many people are using a watch face like this today. And now you need to choose what information shows up here. So for example, weather, calendar, and workouts, or maybe you'd like to look at the date and reminders and sunset. The information that you'd like to see actually varies based on time and your location and your routines. What if we could actually show you a selection of information that you might need अच्छा दोस्तों आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, Well, Siri is कुछ becoming more and क्वेश्चंस more आस्क करो. proactive assistant, knowing what information you need when you need it. And we've created a new watch face which is powered by Siri intelligence. This is the new Siri watch face. Now it automatically displays the information that's most relevant to you, and you can also access Siri just by tapping on the new complication on the top left. And it automatically displays this information with the same type of intelligence we've applied on iOS. We're using machine learning to adapt automatically based on your routines and the apps that you use. अच्छा दोस्तों मैं एप्पल So in the morning I might see, for example, commute time क्योंकि and my obviously first meeting. And if I rotate the crown, I can see more information from ये Siri. मेरे लिए For example, प्रोडक्शन में reminders, काम even नहीं photo देती memories या लाइव from इवेंट्स में the काम same नहीं time last देती. year or maybe from this It's a location. personal thing, And but throughout it's a the day, good whenever thing. you raise your wrist, the face will dynamically update with information for you. So for example, at noon, I might see a reminder to make a call, and I might get a pass to a flight that I'm taking that afternoon. So relevant passes in Wallet can appear here right in the face, including from third-party सर apps. साउंड इंजीनियरिंग की Now, at the बुक्स end of the कहाँ day, से I might लें? see what time the sun's going to set, and also I आप can get इंडिया access से हो to तो the phone Amazon that से can use परचेज the phone करो. app at night. मैं आपको 2 So बुक्स this is बता an दूंगा, वो intelligent लाजमी assistant पढ़ना. right on your और wrist. फिर This is the new Siri face on Apple म्यूजिक Watch. टेक्निक्स और रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा, 2 बुक्स, वो भी आप पढ़ना. Now, sometimes you might like kind of less information and more graphics, and that's the soul of the new सर तो क्या Kaleidoscope और face. लैपटॉप्स It में displays a कुछ भी beautiful अपडेट symmetrical नहीं pattern that करेंगे? slowly changes throughout the day. राहुल rotate the crown and you can give it 2011 feedback मैकबुक whenever you want. प्रो की अच्छी बात यह है आप And there's उसमें multiple हार्ड styles you ड्राइव can choose from. So, for example, अपग्रेड if कर you use a सकते हो photo like टू this, you can SSD create a variety of और आप Kaleidoscope उसमें files. रैम This is अपग्रेड the कर new सकते हो Kaleidoscope face. अप टू 32 GB इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आपको मुझे अपना एग्जैक्ट मॉडल नंबर देना Now, पड़ेगा. Mickey and Minnie have been a big hit on Apple Watch, and more characters have और been able to ऑब्वियसली find their way in. I'm 2011 really जो है वो excited to कंपैटिबल welcome होगा इनके Woody लेटेस्ट and Jesse मैक ऑपरेटिंग and Buzz. सिस्टम के साथ. अच्छा अब देखते हैं अपनी वॉचेस में क्या ला They're रहे going to be हैं. right at home inside the watch, and they're so much fun. And whenever you raise your watch with the Toy Story face, you're going to see a variety of vignettes, kind of like this. A lot of hijinks going on in there. So these are 3 really lively new faces in watchOS: Siri face, Kaleidoscope, and Toy Story. Now let's talk about activity. Apple Watch Acha. has already been helping many people improve their health and fitness, and activity is one of the most frequently used apps on the watch. In watchOS 4, activity notifications are more personalized to you to help you close your rings more often. So you might start off each day with some inspiration by receiving an update like this. This lets you know if you're close to accomplishing an achievement or what you अच्छा, can do to match yesterday's मेरा goals. And these are all दोस्तों आप personalized to you. जो भी And as part कॉल of this करना smart चाहते हो approach, we're also पहले चैट पे introducing अपने आप को monthly इंट्रोड्यूस करवा दो And these एंड देन challenges are कॉल designed मी. to help you either beat or repeat something मुझे you अभी accomplished or पाकिस्तान came से close एक to कॉल doing. आई है, And they're all achievable तो because they're आप based पहले on मुझे your अपने आप को real इंट्रोड्यूस करवाइए And like every great और coach, you want to फिर celebrate your मैं आपकी success. कॉल को So एक्सेप्ट you've added a करूंगा. little bit more fun when you close your rings or earn an achievement. So you get smaller celebrations for everyday successes and bigger celebrations for harder to reach milestones. Now we've also enhanced the workout app to be even easier to use and more powerful. अभी ये Starting बेसिकली with the अपनी new UI, वॉच where की quick starts एप्स right के up बारे front, में you बातें just कर रहे tap हैं. and go. It's much easier, and customers have really loved the new swimming capabilities in Series 2. And we're now enhancing the pool swim workout with auto sets. So just by taking a rest at the edge of the pool, we'll automatically mark each set of swimming that you're doing. And at the end, you'll even get your distance for each stroke type and your pace for each set that you're doing.
And we also are creating, it's great, the full swim thing is very popular. अच्छा We've राहुल, also created some custom आप मुझे motion and अपना heart rate मॉडल नंबर algorithms for बेशक a new ईमेल कर workout type देना called या Keynote चैनल पे interval शेयर training. करना, Now this is तो one मैं of the most आपको popular बताऊंगा आप workouts in the उसमें world. क्या We know क्या it's gonna be a अपग्रेड favorite कर for a lot of सकते you हो. when you start using it. Now, if you like to do अच्छा more than one उमर workout कह in रहे a हैं row, सॉरी it's now सर मैं super था. easy. उमर Just दोबारा swipe कॉल over कर during लो, your current दैट्स फाइन. workout, and then add another one by pressing the plus इंट्रोड्यूस button. करवा के करो ताकि Press मुझे plus, पता लगे I आप can लोग कॉल करने continue वाले another हो, workout. For ताकि मैं example, उस I might हिसाब be से out आपकी doing ऑडियो को cycling here. आउटपुट I करूं. just tap and I continue. Super easy now to do multiple workouts in a single session. Now, many people are doing the workouts indoors at a gym. And when you use gym equipment, it has data the Apple Watch doesn't have, and the watch has data the gym equipment doesn't have. Guys, एक second. You end up with numbers like calories and distance that don't quite match. So in watchOS 4, we've come up with a great solution to this. We're enabling for the Guys, first just time give me two-way 2 data minutes. exchange I'll in be real right time back. I with need gym to equipment. grab another And headphones. you'll be able to simply tap your Apple Watch on an NFC reader on the gym equipment. Your watch will automatically launch the workout app and you can connect. And then your heart rate is read by the मैं watch वापस आता हूं, and sent to the दोस्तों. equipment. And data like incline and speed is sent from the equipment to your watch. And when you start and stop the workout in your gym machine, it does the same thing on your watch. So now all the information matches, it's much easier, and it's a lot more accurate. Now this is being supported by the largest gym manufacturers in the world, who provide about 80% of equipment in gyms today. And Apple Watch-enabled equipment will be rolling out starting this fall. Now let's talk about music. Apple Watch paired with AirPods has really become a magical combination. And we're redesigning the music app on Watch to make this a really great experience. With the new music app, we're going to automatically sync music for you based on what you love to listen to. So for example, we'll automatically get your Apple Music mixes, like new music and favorites, freshly updated on your watch. And the app simply presents some beautiful album art and playlist images, and you can just navigate by rotating the digital crown. And get to the album you like, you can just tap and play. So you can easily play your music now, and we support multiple playlists and music on the watch now. So your music that you love is going to be ready when you are, and making Apple Watch and AirPods a truly magical listening experience. That's the new music app. Now let's take a look at this. To give you a quick demo of watchOS 4, please welcome Vera Carr from the Watch and Health engineering team. Thank you, Kevin. Somebody is calling. 1 second. Good morning. I'm so excited to be एक second here. hold कीजिएगा. The first thing I want to show you is the new dock. I can now vertically scroll through my recently used apps, like the new music app. Using the dock makes finding the apps I'm looking for easier than ever. Next, let's look at the new intelligent Siri watch face. Here in the warm morning, I can see things like the weather for today and my upcoming events. Later today, I'm heading back to San Francisco to see my parents. In the afternoon, the Siri face will proactively update to सर जी वो कोई भी सॉन्ग पियानो रोल में किस तरह क्रिएट करते हैं या बनाते हैं वो आपने नहीं अभी बताया तो वो आप बता देंगे कि नहीं कोई भी सॉन्ग वगैरह जो होता है यार उसको काफी मसला आ रहा है श्योर उसको कंपोजिंग कहते हैं बेसिकली. आपको म्यूजिक लैंग्वेज आती है? हाँ जी जी आपको म्यूजिक लैंग्वेज का पता है? अभी सर जी थोड़ी सी आती है ज्यादा अंदर नहीं गया अभी बिगिनर हूँ सर जी. अच्छा, मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा उसके लिए, तो आपको वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. इंग्लिश आपको समझ में आती है? सर जी तकरीबन आती है और मैं पाकिस्तान से हूँ आप समझ ही नहीं थोड़ा सा. अच्छा वीकनेस वगैरह कोई मसला ही नहीं है. आप बस अपना जो हो डेडिकेशन, अपनी हिम्मत ज़्यादा रखो. तो ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती उनको बेसिकली आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सके कि जी सर. हाँ जी सर जी इसीलिए आपका चैनल सब किया हुआ है और मैं काफ़ी अरसे से आपसे सर जी रब्ते में. चलें, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अब मैं जो आपको बुक्स रिकमेंड करूँगा ना. अच्छा मैं सर जी वो नोट कर लूँ क्या? नहीं, मैं बुक्स मुझे वो मैं अभी इस चैट की लाइव स्ट्रीम की चैट की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा.
तो दोस्तों ये बेसिकली उमर थे हमारे साथ अभी लाइन पे। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन्हें ऑब्वियसली पियानो रोल के साथ म्यूज़िक बनाना है, तो वो पूछ रहे थे मैं किधर से स्टार्ट करूं, किस तरह स्टार्ट करूं। तो मैंने उन्हें यही बताया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसको बेसिकली म्यूज़िक कंपोजिशन कहते हैं, और आपको पियानो की कीज़ का पता होना चाहिए और लैंग्वेज का पता होना चाहिए। उसमें काफ़ी आइकॉन्स होते हैं म्यूज़िक के, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो वो म्यूज़िक के वर्ड्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनका क्या मतलब है। तो उसके लिए मैं आपको बुक्स रेफ़र करूँगा, आप उन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो उसके हिसाब से फिर आप पियानो बजाना भी सीख लेंगे और म्यूज़िक कंपोजिशन और म्यूज़िक लैंग्वेज भी सीख लेंगे। अच्छा, आप ज़रा Tell you about what's next with macOS. Please welcome Craig Federighi. Craig? ओके, ये macOS के बारे में बात कर रहे हैं आप। Thank you, Tim. Hey, good morning. Well, let's talk about macOS. Now, our current release of macOS, of course, is macOS Sierra. Now, Sierra brought Siri and Apple Pay to the Mac. मैं आपके questions की तरफ भी आता हूँ। Desktop in the cloud, and even let you unlock your Mac automatically using the watch on your wrist. Now, people are loving Sierra, and we love it too. So we wanted to spend this year perfecting it. But of course, the question is, what do we call it? राहुल पूछ रहे हैं कि कोई बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं। राहुल, मैं अभी तक मैंने कोई ऐसी साउंड इंजीनियरिंग या रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग की बुक नहीं पढ़ी जो हिंदी या उर्दू में हो। हो सकता है अगर आप मेरा साथ दो इस चैनल के ऊपर, आप सब लोग, तो शायद मिल के जो म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग हैं उनके साथ बैठ के बंदा एक बुक पब्लिश कर सकता है। Now, we talked to the guys and we said this might be misconstrued, but they assured us this name is fully baked. So, now, High Sierra is all about deep technologies that provide a powerful platform for future innovations on the Mac. दोस्तों, तो but we couldn't help ourselves. We also added some refinements, and it starts with Safari. आप लोग अब अपने ब्राउजर्स पे जाके ये लाइव जो एप्पल स्ट्रीम कर रहा है आप इसको वॉच कीजिए और ज़रूर वॉच कीजिएगा। होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे रिलेटेड टू द होम रिकॉर्डिंग और लाइव साउंड इंजीनियरिंग के बारे में। और जो उमर बुक्स का पूछ रहे थे वो अभी बुक्स जो है मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम पे अभी छोड़ देता हूँ टेक्स्ट में, ताकि सब उससे जो है फायदा उठाएं। And Safari's domination continues with the new modern version of JavaScript, ECMAScript 5, where you can see Safari delivers 80% faster performance than Chrome. Now, in addition to being tremendously fast, Safari also helps give you a serene browsing experience. Now, you know, sometimes you go to read an article, and instead of finding something to read, you get this. Just some loud audio and video that auto-plays and disrupts your whole reading vibe. Well, now, don't worry about it because we have autoplay blocking in Safari. Safari detects the sites that shouldn't be playing video and puts you in control. You can always push play. Now, Safari is also key in respecting your privacy. Now, have you ever had this experience where you go to buy something on the web, you even complete the purchase, and then it seems like everywhere you go on the web, it just follows you around. It kind of feels like you're being tracked. And that's because you are. No longer, because Safari has intelligent tracking prevention. Safari uses machine learning to identify trackers, segregate the cross-site scripting data, put it away. So now your privacy, your browsing history is your own. It's not about blocking ads. The web behaves as it always did, but your privacy is protected. Next, I want to talk about some refinements to Mail, and it starts with search. So in addition to providing searches based on recency,
Search in Mail is now using Spotlight to identify your top hits. So the message you're looking for is almost always right there at the top. And if you're into using Mail in full screen, well, now we support split view for your compose window. It's a great way to compose Mail. And Mail is more efficient than ever. It actually uses 35% less disk space for storing your mail. Now, probably our biggest area of refinement in High Sierra is in Photos. Now, yeah, Photos had some great new organization and editing tools. दूसरा जो है ये लिंक मैं छोड़ and रहा a new हूँ. view that has all your imports in chronological order. And इस बंदे से आप इसको फॉलो करके इसकी बुक्स पढ़ के आपको रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग टेक्निक्स आप सीख सकते हैं. By just media types like video, so it's really easy to get to just what you're looking for. We've also improved faces. It recognizes far more faces automatically using advanced convolutional neural networks. And when you put effort into categorizing and naming people, well, that's now synchronized automatically across all your devices. Now, we also have some great enhancements to editing inside of Photos. You can see here on the right-hand side, all of your editing tools are arrayed, and there are a bunch of great new ones, including curves, which allows you to fine-tune the color and contrast in your image, and selective color, which lets you modify color in a selective range. And I think you're going to like this one, because if you like to do edits in a pro tool like Pixelmator or Photoshop, well, now when you punch out to that other editing tool, all of your edits automatically synchronize right back to your photo library. Now, Apple pioneered printed books based on projects you construct right inside of the photo application. And now we're opening this up to third parties. They're going to offer some amazing new printing services, full framed wall-mounted photos, and even publishing websites, all based on projects right inside of Photos. So those are some quick refinements, but I want to return to the main story now, and that's technology, because we've gone deep on the fundamentals. Data, video, music composition के लिए ये and when book it comes to data, the fundamentals are in the file system. Now, the Mac file system has its roots, actually, HFS, from 30 years ago. Well, a lot has changed since then. We have a lot of flash drives. Our storage is 1 billion times larger, and it's time for a more modern file system. So I'm pleased to announce that we're bringing the Apple file system to macOS as our new default. Now, APFS is a thoroughly modern file system, 64-bit top to bottom. It's safe and secure with built-in crash protection and native encryption. And it's ultra responsive with modern features like instant file and directory cloning and high-performance parallelized metadata operations. Now, what does that really mean in practice? Well, let's take a look at a simple file duplication inside of Sierra. अगर कराची में रहते हो तो डेफिनेटली मिल जाएगी. अगर आप पंजाब में रहते हो, लाहौर या इस्लामाबाद के करीब, तो लाहौर से भी मिल जाएगी और इस्लामाबाद से भी मिल जाएगी. There we go. Now let's watch that in High Sierra. Well, we're going to go up to the File menu, we're going to subduplicate, and we're done. Okay, दोस्तों, तो मैं इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं इस WWDC इवेंट को लाइव देख सकूँ. ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि जो यंगर जनरेशन है वो भी हमारे मुल्कों से इन तरफ क्रिएटिव चीज़ों में आए और क्रिएटिव प्रोडक्शन करे. और मैं ये चाहता हूँ कि जो क्रिएटिव काम है वो हर पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, बजाय इसके कि सर्टेन लोग इस चीज़ में घुसें. तो इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ ख़त्म करते हैं. आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा, जो लेटर व्यूअर्स हैं, ज़रूर आस्क कीजिएगा. और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़. अपने वीकडे को एंजॉय कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव स्ट्रीम में. And we're also building it into Pro Tools like Final Cut, Motion, and Compressor. Now I want to return to our main story, which is graphics. And graphics are all about the GPU. The GPU has been the performance superstar of the last decade, delivering incredible gains in computational performance. Now, our API for high-performance graphics is Metal,
And developers have taken amazing advantage to Metal. This is Dawn of War 3 from Feral Interactive, incredible graphics. This is DaVinci Resolve from Blackmagic, which can accelerate many editing operations.